Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your work properly. Let's continue our chapter 17 of class 11, that is breathing and exchange of gases. In our last class, we have already give the idea about human respiratory system, and while we are studying about human respiratory system, we know about some terms like pulmonary respiration and cutaneous respiration. As you know that we are human beings, means we are vertebrates, and we have a well developed or well organized respiratory system in which lungs is the major organ which plays an important role in gaseous exchange. So the respiration that takes place in lungs is called as pulmonary respiration. So what will happen during pulmonary respiration, we will see that steps in pulmonary respiration. What steps are taken during, or which events are taken during the process of pulmonary respiration, means respiration through lungs. So now let's write the points, and then we will discuss about the points that how steps are involved in pulmonary respiration. First, we know that breathing or pulmonary ventilation, we can say pulmonary ventilation takes place. Pulmonary ventilation take place by receiving the oxygen from atmosphere, by receiving the oxygen from the atmosphere and releasing the alveolar carbon dioxide. Means while we are doing respiration, then we take oxygen from air or atmosphere and we release the carbon dioxide from alveoli. That's why pulmonary ventilation or pulmonary respiration takes place by receiving the oxygen from the atmosphere and releasing carbon dioxide from the alveoli. This is the first step that we see during pulmonary respiration. And again, what will happen? The exchange of oxygen and carbon dioxide takes place across the alveolar membrane. So exchange of CO2 and O2 takes place at the alveolar membrane. You know what is alveolar membrane? Alveolar membrane is the membrane through which diffusion occurs, and again the transport of these gases takes place in the blood. As we know that the gaseous exchange in case of human beings or higher organisms can't be done through diffusion. That's why we need a large system for its transportation. That's why the blood is the best medium to transport these oxygen. So we can write, after exchange of gases in the alveolar membrane, these gases transport in blood. So we can write transport of these gases through blood. Clear? So after transportation, what will happen? We can say diffusion of O2 from blood into body tissue, and again CO2 is taken by the blood. Clear? So we can write the diffusion of oxygen, from blood into tissues. Oxygen from blood into tissues and CO2 from tissues to blood. From tissues to blood. So this event will happen during pulmonary respiration, and utilization of oxygen by means of oxidation through different organs. The fifth step is utilization of oxygen. Clear? By cells
Third, oxidation. Oxidation of normally oxidation of food occurs. So these are the steps. We are discussing about pulmonary respiration that is seen in human beings. So these steps are takes place. First we receive. सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं और जो लंग्स के अंदर जो एल्वियोली है, एल्वियोली के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम रिलीज करते हैं. पहले स्टेप मतलब इसमें बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है, मतलब लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है, उस रेस्पिरेशन के दौरान कौन कौन सी इवेंट्स होती है, कौन कौन सी स्टेप्स के थ्रू ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है. तो पहला स्टेप हो गया, हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिसीव किया, एल्वियोली से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया. दूसरा स्टेप बोल रहा है फिर से ये गैसियस एक्सचेंज हुआ, किस किस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का. किसके थ्रू, एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू. आपको पता है जो एल्वियोली होता है वो लास्ट साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है. तो लास्ट में जो भी जा रहा है गैसेस, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसका एक्सचेंज होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन के ऊपर. थर्ड स्टेप बोल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस गैसेस थ्रू ब्लड. अगेन गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता हायर ऑर्गेनिज्म के केस में, तो यहाँ पे एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, ब्लड. तो ब्लड के साथ ये गैसेस मिक्स होके ट्रांसपोर्ट होते हैं. फिर फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यूज. मतलब ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन गया प्यूरिफिकेशन के बाद वो हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे तो वो जाएगा टिश्यू के पास. फिर से टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको कलेक्ट करके लाएगा. क्लियर. सो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यूज एंड CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड. इट मीन्स ब्लड से टिश्यू में जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में आएगा. फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन हमने लिया और ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड के थ्रू हर सेल के पास, अब उस ऑक्सीजन का अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन होगा. नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. तो इस रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन गया था, जो हमने फूड इनटेक किया था ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन के लिए इस ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरी होता है. तो इसलिए ये ऑक्सीजन जो गया था, इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन सेल के थ्रू होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए. तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है आपका 3 मार्क्स में आ सकता है. तो इसलिए इसको आप ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर. फिर से बता रही हूँ, पल्मो मतलब लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, और जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं उस टाइप की रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे हम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन. एंड दीज आर द स्टेप्स. सो नाउ लेट्स डिस्कस द mechanism of breathing, how breathing occurs. Now we will discuss about the mechanism of breathing or respiration. Clear? So the next topic is mechanism of breathing. As we know, breathing involves 2 major steps. ब्रीथिंग कैसे होती है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, प्रोसीजर क्या है. ब्रीथिंग 2 स्टेप के थ्रू होता है. एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन. सो ये जो इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है, इसके दौरान ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विच पर्टिकुलर एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इनसाइड आवर लंग्स and how much amount of oxygen our body takes, how much amount of carbon dioxide our body release. So all these processes occur during the mechanism of breathing. So we can write breathing involves two steps or 2 events. One is inspiration. You know about inspiration, I have already discussed with you. Inspiration means taking oxygen from the atmosphere. Taking oxygen from the atmosphere into the lungs or alveoli of the lungs. This is called as inspiration. And next one is your expiration. Expiration means releasing carbon dioxide
to atmosphere from lungs, or we can say alveoli of lungs. Clear? So these are the main two steps. So how this takes place and what will happen during inspiration and expiration? As we know, during inspiration our chest cavity get expanded, and during inspiration our chest cavity get expanded, because when oxygen is breathed in or taken, then it goes to the alveoli, and the alveoli get swollen up, due to which our chest cavity get expanded. But when we release carbon dioxide, means during expiration, as we release carbon dioxide, so our chest cavity get contracted. So these two events takes place. Now let's understand through diagram that how the inspiration and expiration occurs. Clear? So now let's see. You can see this is the diagram of lungs. This is the diagram of lungs. And here what will happen, how the air enters in and released out. Clear, students? So here you know that rib cage is present. So these are the rib cage. Here the intercostal muscles are present, and during inspiration, as we know that, and after this the oxygen is enters. So here the oxygen enters. This is inspiration. This is inspiration, during which the oxygen enters, and while the oxygen enters, then the pressure is fall against. It means when we take in oxygen, then there is a pressure is takes place against the gravity. We can say the pressure is takes place out or takes place against the gravity. That's why for atmospheric pressure, maintaining the atmospheric pressure, the intrapulmonary pressure is negative. Intrapulmonary pressure is negative during inspiration, and during expiration it's vice versa. Means during expiration same diagram should be drawn like this, and here the carbon dioxide is released. The carbon dioxide is released. So we can say here the pressure is higher than that of the atmospheric pressure. During expiration, pressure is higher than atmospheric pressure. Simply you have to remember two things, that what will happen during inspiration and expiration. During inspiration the pressure, or we can say the pressure is less than the atmospheric pressure, and during expiration the pressure is more than the atmospheric pressure, and during inspiration our chest cavity get expanded, and during expiration our chest cavity get contracted as we release carbon dioxide, and as we take in oxygen, so our chest cavity get expanded during inspiration. So this is all about the mechanism of breathing, and in our next class we will study about the topic that is your respiratory volumes.